हमने पीपीसी की एक सीरीज़ शुरू की हुई थी, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। इसमें जनरल एक्सेप्शंस आ जाते हैं। आर्टिकल 76 से स्टार्ट हो रहा है। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of a fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. Illustration: as a soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law, A has committed no offense. B. An officer of the court of justice being ordered by the court to arrest Y, and after due inquiry, believing Z to be Y arrest Z, A has committed no offense. तो आर्टिकल 76 में ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो कि बाउंड बाय लॉ हो और वो गुड फेथ के साथ अगर कोई मिस्टेक करें और मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो बल्कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बिना पे अगर कोई गलती करें तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। जैसे कि एक सोल्जर हैं, वो बाउंड बाय लॉ है कि अगर कोई किसी को कत्ल करता है उसे पकड़ ले। स्टेशन नंबर 1 में कहा गया है कि एक सोल्जर हैं जो कि एक मॉब पे फायर करता है सुपीरियर ऑफिसर की सुपीरियर ऑफिसर के कहने पे। सुपीरियर ऑफिसर जब उसे कहेगा तो वो बाउंड बाय लॉ है, उसे करना ही करना है। अगर वो फायर करता है तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। ए एक एक ऑफिसर हैं जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है आपने वाई को पकड़ के लाना है। अब ए जाता है लेकिन ए वाई को पकड़ने के बजाय जेड को वाई समझ के पकड़ के लाते हैं। तो इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ तो नहीं है लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बिना पे गलत। तो यहाँ पे वाई तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, ये जनरल एक्सेप्शन में आ जाते हैं। आर्टिकल 76 के मुताबिक कोई ऑफेंस नहीं होगा, यानी उस बंदे को कोई सज़ा नहीं होगी। Act of judge when acting judicially. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in an exercise of any power which is good faith or belief to be given to him by law. अगर कोई जज दौरान समात कोई एक्ट करता है तो वो जो भी करता है वो ऑफेंस नहीं होगा। Act done pursuant to a judgment or order of the court. Nothing which is done in pursuant of or which warrant by the judgment of the order of the court of justice, if done whilst such judgment or the order remains in force of the offence, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order to prove the person doing the act in good faith believed that the court had such jurisdiction. कोई भी कोर्ट या जज कोई भी जजमेंट दे दे या कोई ऑर्डर दे दे जो कि गुड फेथ पर मबनी होगा तो उस सूरत में कोई ऑफेंस कमिट नहीं होगा। Act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believing himself to be justified by law in doing it. A seems Z which appears to A to be murdered A in an exercise of the best of his judgment exercise in good faith of the power which
The court gives to all persons of apprehending murders in class of Z, CZs. In order to bring before the proper authority, A has committed no offense, though it may turn out that Z is acting in self-defense. इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ऑफेंस नहीं होगा जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बिना पे कोई शख्स किसी बंदे को मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो, जबकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बिना पे कोई ऑफेंस कमिट करें तो ये ऑफेंस नहीं होगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए जेड को देखता है कि जेड ए को मार देगा, तो कानून के मुताबिक वो जेड ए को पकड़ लेता है और कोर्ट के सामने पेश कर देता है या ए को पकड़ के रखता है, तो ये सेल्फ डिफेंस में करता है। तो इसने जो किया है, जो एक्ट कमिट किया है, ये सेल्फ डिफेंस में किया है, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। Accident in doing a lawful act. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune, and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act or lawful manner, by lawful means and with proper care and caution. It is a work with the head, यानी कि लॉफुल एक्ट को करते हुए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो ऑफेंस नहीं होगा। जैसे कि पुलिस का काम मुजरिम को पकड़ना है जिसने जुर्म किया है, तो डाकुओं को पकड़ना पुलिस का काम है। पुलिस डाकुओं को पकड़ते हुए एक दो फायर मार लेता है जिससे डाकू मर जाते हैं, तो उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। Act likely to cause harm but done without criminal intention and to prevent other harms. Nothing is an offense merely by reason of it being done with the knowledge that is likely to cause harm. If it is done with the criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harms to persons or property. इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो एक्ट हुआ है वो हार्म करने के लिए किया गया है, लेकिन जो हार्म जो होगा उसमें क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज नहीं होगा, बल्कि ये मज़ीद प्रिवेंशन के लिए होगा। मसलन एक बोर्ड है जो कि उसके सामने एक बड़ा बोर्ड आता है, तो उसमें 30 लोग हैं, तो वो रास्ता तब्दील कर लेता है, तो उसके सामने और एक बोर्ड आ जाता है जिसमें उससे कम बंदे सवार होते हैं, तो जिसमें ज़्यादा होता है तो उसमें ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो बोर्ड्स अपने वे को चेंज कर सकता है और लेस हार्म लेस जिस शिप में लेस एकोमोडेशन होगी उसको हिट करके लेस हार्म कमिट कर सकता है। तो इस सूरत में वो ऑफेंस शुमार नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज नहीं होगी और वो ज़्यादा नुकसान को बचाने के लिए कम नुकसान बर्दाश्त करता है। Article 22 is about act of a child under 10 years of age. Nothing is an offense which is done by a child under 10 years of age. आर्टिकल 82 में ये कहता है कि चाइल्ड जो कि 10 साल से छोटा होगा तो वो जो भी एक्ट कमिट करेगा वो ऑफेंस के ज़ुमरे में नहीं आता। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 7 अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, तो जो 7 साल से बड़ा होगा या 10 साल से बड़ा होगा और 14 साल से कम होगा, जो इमेच्योर होगा, अगर वो कोई एक्ट करता है वो ऑफेंस नहीं होगा। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसोन माइंड,
अनसाउंड माइंड भी जो एक्ट कमिट करता है वो ऑफेंस नहीं होगा। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कास्ट अगेंस्ट हिज विल। अगर किसी की मर्ज़ी के मुताबिक उसे मर्ज़ी मर्ज़ी के बग़ैर किसी को टॉक्सिक करें, इसको ड्रग्स दें, और अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उस सूरत में वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it by the reason of intoxication of incapable of knowing the nature of the act, and that he is doing what is either wrong or contrary to the law, provided that the things which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। क्योंकि जिस बंदे को नशावर चीज़ दी गई हो, अगर वो कोई एक्ट करता है तो वो एक्ट तस्वुर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो जो कर रहे हैं वो कानून के मुनाफी है या मुवाफ़िक हैं, और जो ड्रग्स पिलाई गई हैं वो उसके अगेंस्ट हिज विल दी गई हैं, तो ये ऑफेंस तस्वुर नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है तो वो ऑफेंस के ज़ुमरे में नहीं आएगा। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड, उसके लिए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन का होना ज़रूरी है जिसको टॉक्सिकेट किया गया है। In case where any act done is not an offense unless done with particular knowledge and intention। अगर पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन होगी तो हम इसे ऑफेंस कहेंगे, और अगर पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन नहीं होगी तो हम उसे ऑफेंस नहीं कहेंगे। अ पर्सन who does the act in a state of intoxication shall be liable to deal with as if he had the same knowledge, and he would have had if he had not been intoxicated, unless the things which intoxicated him was administered to him without the knowledge or against his will। 87 is about act not intended and not knowing to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is known by the doer or to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause, or the intent intended by the doer of cause to the person against above 18 years of age who has given the consent, whether expressed or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known to be doer to be likely to cause any such person who has consent to take the risk that harm। इस आर्टिकल में ये कहता है कि इंटेंशन के बग़ैर या नॉलेज के बग़ैर अगर कोई एक्ट हो जाता है जिसमें डेथ भी हो सकता है या ग्रीवियस हार्ट भी पहुंच जाए, लेकिन उसमें इंटेंशन ना हो, नॉलेज भी ना हो, तो उस सूरत में ये इसको ऑफेंस तस्वुर नहीं किया जाएगा। जैसे कि दो बंदे हैं, वो आपस में खेल रहे होते हैं और अचानक एक एक की वजह से दूसरे को हार्ट पहुंचता है, तो उस हार्ट की बिना पर एक को पहले को सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी और पता भी नहीं था कि हार्ट होगा या नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन में ये कहा है कि दो बंदे हैं जो कि नेज़ाबाजी खेलने पे एग्री हो जाता है, और वो खेलते खेलते एक नेज़ा दूसरे पे लग जाता है, जिसकी बिना पर दूसरे को हार्ट हो जाता है। तो इस बिना पे उन दोनों की या एक की दूसरे को हार्ट करना मकसूद नहीं था, या डेथ करना या ग्रीवियस हार्ट पहुंचाना, तो इसमें इंटेंशन भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं था, तो इसलिए कोई ऑफेंस नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन एक्ट कमिट होगा।
act not intended to cause death done by consent of good faith and personal benefit। एक्ट हो जाता है लेकिन जो एक्ट हैं वो किस लिए किया गया है, अ, उस बंदे की गुड फेथ के लिए। Nothing is not intended to cause death or an offense by reason of any harm which is not caused or by intended by the doer or caused or by known to by the doer of likely to cause to any person for his benefit, it is done in good faith, and which has given consent whether express implies and suffered that harm or to take the risk of that harm. A is a surgeon knowing that particular operation is likely cause death of that who suffers under a pain complaint but not intending to cause that death and intend it in good faith that benefits perform that operations in that and that consent A has committed no offense। अगर कोई डॉक्टर हैं वो किसी अपने पेशेंट की गुड विल के लिए कोई ऑपरेशन करता है तो उस सूरत में उसने कोई एक्ट कमिट नहीं किया। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और इंसेंट person or by consent of the guardian। चाइल्ड या इनसेन पर्सन की बेनिफिट के लिए गुड फेथ के साथ अगर कोई एक्ट कमिट होता है तो वो ऑफेंस के ज़ुमरे में नहीं आता। Illustration में A in good faith for his child benefits without his child consent has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death but will intend to cause the child's death. A is within the exception insomuch as his object was the coup of the child। Consent known to be given under fear and misconception। अगर फेयर के वक्त में मिसकंसेप्शन के बिना पे कोई कंसेंट देता है तो वो कंसेंट नहीं होता। अब फेयर क्या है, फेयर ऑफ इंजरी हो सकता है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है। कंसेंट इज़ नॉट अ कंसेंट, सच अ कंसेंट इज़ intended by the section of this code if the consent is given by the person under fear of injury or under misconception of fact and if the person doing the act likely or has risk conduct was given in consequences of such fear and misconception। और इसी तरह कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन भी है, वो कंसेंट में नहीं आता। और कंसेंट ऑफ चाइल्ड भी कंसेंट में नहीं आता जो कि 12 साल से छोटा हो। Exclusions of act which are offense independently of harm caused। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कि मिसकैरेज के दौरान मिसकैरेज के लिए अगर ख़तरा है तो मिसकैरेज कर सकती है लेकिन अगर उसके अलावा तो नहीं कर सकती। The exception in the article section 87, 88, 89 did not exert any act which is offenses independently of an harm which they may cause or be intended to cause or known to be likely to cause to the person giving a consent or with behalf of the consent of the given। 92 is about act done in good faith or benefit for a person without consent। कंसर्न के बग़ैर किसी बंदे की गुड फेथ के लिए अगर कोई कुछ करता है तो वो एक्ट हो जाता, अगर कोई एक्ट हो जाता है तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। जैसे कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसके साथ कोई गार्डियन ना हो तब डॉक्टर उसकी विल के बग़ैर, उसकी कंसर्न के बग़ैर और उसकी विल के बग़ैर ऑपरेशन कर सकता है। और ऑपरेशन के बाद अगर वो बंदा मर जाता है तो डॉक्टर ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is
done in good faith even without the person consent if the circumstances are such that it is impossible for the person to signify consequences, uh, and if that person is incapable of giving consent and has no guardian and other person in lawful charge for of himself from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to done with benefit, provided that the first exception shall not extend in the international causing of death of the attempting to cause death. Secondly, that this exception shall not extend it to the doing of anything which the person doing it likely to be like known likely to cause death for any purpose other than a preventing of death and grievous hurt or to causing of the grievous hurt or disease or infirmity. Thirdly, that the exception shall not extend it to a voluntary causing of the hurt or to an attempt of cause hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt. For the exception shall not extend it to the abatement of an offence to committing of any offence it would not extend. Illustration that is torn from a house and in civil surgeon's point, यानी ये कहता है कि अगर कोई डॉक्टर हैं जो कि किसी मरीज़ का उसके साथ अगर कोई वो उसका गाइडियंस या उसके साथ कोई रिश्तेदार वगैरह ना हो तो उसके कंसेंट या विल के बगैर उस का ऑपरेशन कर देता है और अगर वो मर जाता है तो उसमें डॉक्टर ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया यानी 92 is all about the medical treatment of any person have who don't have along with his guardian. Communication made in good faith. No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to a person to whom it is made for is good made for the benefit of that person. अगर कोई कम्युनिकेशन करता है कोई भी शख्स जो कि उसके लिए गुड फेथ के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करता है लेकिन उसके बाद अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। जैसे कि अगर कोई शख्स हकीम या कोई डॉक्टर कहता है कि तुम इतने दिन बाद मर जाओगे, लेकिन उसके बाद ये होता है कि वो बंदा उसी दौरान उसी टाइम पे मर जाता है, उसके मुअय्यना या उसके बाद वाले किसी भी टाइम पे मर जाते हैं, तो उसने जो बात की थी वो गुड फेथ में की थी। इस बिना पे उसने कोई ऑफेंस ये कमिट नहीं किए कि कह कि तुम फलाना टाइम पे मर जाओगे, यानी उसने जो किया गुड फेथ में किया। ये जो कम्युनिकेशन थी गुड फेथ में थी, तो इस वक्त हम ये नहीं कह सकते उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। Illustration में कहता है is a surgeon in good faith communicates a patient to his opinion that he cannot live. The patient died in consequences of the shock. He has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient death. 94 is about act to which a person is compelled to by threats. 94 यानी उन ऑफेंसेस के बारे में है जो कि होता है थ्रेट्स और थ्रेट्स के बिना पे, यानी कोई किसी को थ्रेट करता है उसके बाद वो बंदा जाके कोई क्राइम कमिट करता है, कोई ऑफेंस करता है या कोई एक्ट करता है, तो वो जो एक्ट कमिट करता है वो ऑफेंस होगा या नहीं होगा। तो कहते हैं कि मर्डर और स्टेट के ख़िलाफ़ कोई ऑफेंस करना, स्टेट के ख़िलाफ़ कोई एक्ट करना, अगर ये दोनों करें तो वो ऑफेंस होगा, बाकी सब ऑफेंस के ज़ुमरे में नहीं आता। अगर थ्रेट मिली है तो एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट punishable with death. Nothing is an offense which is done by a person who is compelled
to do it by means of threat, which at the time of doing is reasonably caused the apprehensions that instead doing and that person will otherwise be in consequences provided the person doing the act did not of his own accord for a reasonable apprehension of harm himself short instant death himself execution. A person who of his own accord or by reason of a threat or being beaten join a gang of attackers knowing their character is not entitled to be benefit of the exceptions on the grounds of his having been compelled by the associations to do anything that is an offense by law. And the personal seize of gang decades are forced by threat by instant death or to do a thing which is to offense by law. Or example of Smith compelled is to take his tools and to force the door of the house for the decades to enter and plunder. It's entitled to the benefit of these exceptions. Act causing slight harms. Nothing is an offense by reason that is caused or that is intended to cause or that is known to be likely to cause any harm of that harm is so slight that no person or ordinary sensitive temper would complain the sum of harms. अगर कोई अगर कोई कम हार्ट पहुंच जाता है तो उसमें कोई ऑफेंस नहीं होगा